Assalamu alaikum and welcome to Dr. Imran's official, and into the video we will discuss the muscles of leg that are located onto the anterior compartment of the leg, and the muscles that are located onto the posterior compartment of the leg. So all these muscles play a very important role in our daily routine life, like jumping, walking, running, climbing stairs, and the abduction, adduction, rotation, and squatting. So all these activities are involved. In all these activities, these muscles are involved. So in today's lecture, we will discuss the location of each and every muscle of leg muscle, and into the lecture we will discuss the function of each muscle that are located onto the anterior compartment of the leg and onto the posterior compartment of the leg. So if we will start from the very first muscle, that muscle is located onto your front part, this part of muscle on leg hip region. The first muscle is located onto the hip region, that is located just into the middle of your hip, and this muscle is called gluteal muscle. This muscle is a basically group of gluteal muscle. The gluteal muscle is divided into two parts, that is gluteal maximus and gluteal minimus. So these are the two muscles that are considered as a group of gluteal muscle. So the basic function of gluteal muscle is that it help in abduction, as we have discussed in our early lectures about abduction, rotation, and adduction. So once again, I will describe basically these definitions. If your body comes close to your part, this is called adduction, and if your body parts comes away from your body, this is called abduction. So this muscle helps in abduction as well as adduction and rotational movement of the leg. So these muscles help in external rotation always, and as well as internal as well as external rotation. So there are four different function of gluteal muscle. The first function of gluteal muscle is that abduction, adduction, and internal and external rotation of the leg. So these are the basic function of gluteal muscles. If we comes to the second muscle is called hamstring muscle. Hamstring muscle is located onto the posterior compartment of your leg. Means it is located on the back side of your leg. The hamstring muscles are basically thigh muscles, and they help in walking, they help in climbing stairs, they help in squatting, and they also help in different kind of movements that are carried out that are carried by the leg. So if we consider hamstring muscles, so we have discussed that hamstring muscle definitely helps in walking, in running, climbing stairs, and different kind of other movements of leg and squatting. The next muscle that is located on the calf muscle, near the calf muscle, this is basically group of calf muscle, and this muscle is called gastrocnemius muscle. The gastrocnemius muscle is located on the lower part of your leg, located just here, and this is the most powerful muscle, and this muscle definitely helps you in walking, and this muscle also maintain posture of your body. Now we'll come to the next muscle. Next muscle is called quadricep muscles. The quadricep muscle or quadrilateral muscles are located just on the anterior compartment of your leg. Means they are located into the front side of your thigh region. And the basic function of quadricep muscle is that they help in running, they help in walking, and they help in jumping, they help in kicking. So these functions are carried out by the hamstring muscles.
sorry, these functions are carried out by the quadricep muscles. Then the next muscle is called sartorius muscle. Sartorius muscle is the longest muscle that starts from the starting of your thigh and to the knee. And the basic function of sartorius muscle is that it contains two important functions. The first function of sartorius muscle is that it flex and rotate your hip, and the second function of sartorius muscle is that it bends your knee. So these are the two more important function of sartorius muscle. After sartorius muscle, we will discuss peroneal muscle. Peroneal muscle is located just to the anterior, just to the lateral side of your leg, and it is connected to the foot, and it basically stabilizes your ankle joint and helps in the movements of foot. So we have discussed the posterior compartment of the leg. We have discussed the anterior compartment of the leg. Now we will discuss the basic functions that are located on the posterior compartment of the leg. If here you see this muscle, this one and this one, and these muscles are located onto the posterior compartment of your leg, and these muscles are called bicep femoris muscles, which are the longest muscles of the thigh, and they help in hip and knee joint movement. There are two basic functions of the bicep femoris. First one is that they help in hip and knee joint movements. After bicep femoris, then comes another muscle that is called semitendinous muscle. So the semitendinous muscle basically also located onto the posterior compartment of your leg, and the basic function of this muscle, semitendinous muscle, is that it rotates your legs internally, and it also assists popliteal muscle. After semitendinous muscle comes another muscle that is called semimembranous muscle, and the semimembranous muscle is a flat muscle, flat tendon-like muscle, and it helps in flexion and internal rotation of knee. After semi-membranous muscle, we will discuss the popliteal muscle. Popliteal muscle is a small muscle that is located just beside of knee, on the back side of knee. It is a small, smooth muscle. Basically, it stabilizes the knee. The basic function of popliteal muscle is that it stabilizes the knee. Then comes last muscle that is called soleus muscle. Soleus muscle is basically superficial muscle that is located onto the posterior compartment of your leg, just nearby your ankle. And the basic function of soleus muscle is that it helps in standing and it's help in walking. So we have discussed all these muscles that play a very important role in walking, jumping, running, squatting, adduction, abduction, all kind of movements. If we, in a brief view, we will in a short line we will discuss again these muscles. uh, First we have discussed gluteal muscle. The gluteal muscle basically contain two muscles, gluteal maximus and gluteal minimus. So this is called the basically gluteal muscle group, and the basic function of gluteal muscle group is that abduction, adduction, internal rotation and external rotation of thigh. So this is the basic function of gluteal muscle. The second muscle is called hamstring muscles. Hamstring muscles are located on your back side of your thigh, and in other words, you can say that hamstring muscle is the muscle of posterior compartment of your leg, and the basic function of hamstring muscle is walking, running, climbing stairs, squatting, and some other movements of leg.
After hamstring muscles, we have discussed gastrocnemius muscle. Gastrocnemius muscle is a part of calf muscle, and the basic function of gastrocnemius muscle is that it is the most powerful muscle, and it helps in walking and it maintains your posture. So this is the one of the important point that we have discussed about the gastrocnemius muscle. If someone has a problem with the posture, it means that gastrocnemius muscle is not working properly. So, after discussing all these, we would move to our front part of our thigh, that is basically the anterior compartment of our thigh, front part of our thigh. So, this muscle is called quadricep muscles. Quadricep muscles are located on the front part of your thigh, and the basic function of quadricep muscle is that running, walking, jumping, and kicking. So these muscles also play a very important role. After quadricep muscles, we will discuss sartorius muscles. Sartorius muscle is a very long muscle that starts from your abdominal area and comes to your knee. And the basic function of sartorius muscle is that it flex and rotates your hip joint, and it also bend your knee. So these are the two most important function of these muscles. After this muscle, we will discuss peroneal muscle. Peroneal muscle is located anterior part of your leg, just attaches to your foot, and the basic function of peroneal muscle is that it stabilizes your knee joint. It stabilizes your ankle joint, and it helps in the other movements of the foot. So after discussing peroneal muscle, we will come to the basically posterior compartment of leg on both sides. We've discussed first muscle, that is called bicep femoris muscle, that is located on the posterior compartment of your leg on either both side of your leg. So this is a long muscle, and the basic function of bicep femoris muscle is that it help in hip and knee joint movement. After bicep femoris, then comes semitendinous muscle located on the posterior compartment of your leg. And basic function of semitendinous muscle is that it rotates your leg internally. It rotates your leg internally. And another important function of semitendinous muscle is that it assists popliteal muscle. It assists popliteal muscles to move your knee. After semi-membranous, we would come to the semi-tendinous. We will come to the semi-membranous muscle. Semi-membranous muscle is a flat tendon muscle, and basically it helps in flexion, internal rotation of knee. So two functions. First function is that it helps in flexion of knee, and second important function is that it helps in rotation of knee. So these are the two important functions of semi. Membranous. After semimembranous, we will go to the popliteal muscle. Popliteal muscle, as I have discussed earlier, that the popliteal muscle is located on the just back side of your knee. It is a small, smooth muscle that basically stabilizes your knee. And at last, we have discussed soleus muscle. Soleus muscle is a basically superficial muscle that is located on the superficial surface of your skin. And the soleus muscle is basically a muscle of posterior compartment of your leg and located just nearby your ankle. And the basic function of soleus muscle is that it helps in standing, it helps in walking. So these are two important functions. So we have discussed briefly all these muscles and their functions and their locations. And now I would like to repeat this lecture in Urdu because for our local students. स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है, बेसिकली ये जो लेक्चर है हमारा, ये उन मसल्स के बारे में है जो लेग के पास पाए जाते हैं। और ये जो लेग मसल्स हैं, ये बेसिकली हमारे
एंटीरियर कंपार्टमेंट और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग में पाए जाते हैं। और एंटीरियर कंपार्टमेंट मीन्स जो फ्रंट पार्ट ऑफ योर लेग है, और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट मीन जो आपकी लेग के बैक साइड वाला एरिया है, उसमें मसल्स पाए जाते हैं। अब ये जो मसल्स होते हैं रूटीन लाइफ में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो हम डेली रूटीन लाइफ में चलते फिरते हैं, जंपिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, स्क्वाटिंग करते हैं, एबडक्शन, रोटेशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, बेसिकली जितनी काइंड ऑफ मूवमेंट्स हैं सारी हमारी लेग की, ये सारे इन्हीं मसल्स की वजह से होती है। और अगर हम इन मसल्स को डिस्कस करें, इन मसल्स को अब हम डिस्कस कैसे करेंगे? इन मसल्स को बेसिकली हम डिस्कस इस तरह करेंगे कि इनकी लोकेशन के साथ साथ इनके फंक्शंस को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम मसल डिस्कस करेंगे वो ग्लूटल मसल है। और ग्लूटल मसल बेसिकली कहाँ पर पाया जाता है? ये जो आपका हिप एरिया है, मिडल एरिया ऑफ द हिप है, वहाँ पर पाया जाता है। और जो ग्लूटल मसल है, ये बेसिकली ग्लूटल ग्रुप ऑफ मसल इसको कह सकते हैं। ये बेसिकली ग्लूटल मैक्सिमस और ग्लूटल माइनस होता है। और अगर इसके फंक्शंस को हम डिस्कस करें ग्लूटल मसल के, तो ग्लूटल मसल मसल का जो बेसिक जो फंक्शन है वो एबडक्शन है, एडक्शन है, इसके अलावा इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ लेग। तो ये बेसिकली फंक्शंस आ गए इसके ग्लूटल मसल के हमारे पास। ग्लूटल मसल के बाद हमारे पास आता है हैमस्ट्रिंग मसल आता है। जो हैमस्ट्रिंग मसल है बेसिकली जो आपकी थाई का जो बैक साइड होती है वहां पर पाया जाता है। और हैमस्ट्रिंग मसल जो है ये बेसिकली वॉकिंग में हेल्प आउट करता है, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, सीढ़ियाँ चढ़ने में हेल्प आउट करता है। इसके अलावा स्क्वाटिंग, स्क्वाटिंग मीन्स स्क्वाट करना, कि जैसे आप वो फुट के ऊपर है ना, पंजों के ऊपर खड़े होते हैं और हील को आप ऊपर उठा लेते हैं, तो ये स्क्वाटिंग बेसिकली होती है। और इसके अलावा मुख्तलिफ जो फंक्शंस है लेग के, उसमें ये हेल्प आउट करता है। इसके अलावा आपने देखा होगा जैसे क्रिकेट का आप खेल तो देखते ही होंगे, तो उसमें आप देखते हैं खिलाड़ी अगर ऐसे डाइव करता है तो बेसिकली उसके अगर ये हैमस्ट्रिंग मसल अगर इंजर हो जाए तो वो फिर लंगड़ा के चलता है, तो बेसिकली उसकी इंजरी हैमस्ट्रिंग इंजरी होती है, जो उसको वॉकिंग, रनिंग और जंपिंग में हेल्प आउट करता है। उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे जो आ जाता है गैस्ट्रोनीमियस मसल आ जाता है। अब जो गैस्ट्रोनीमियस मसल है ये बेसिकली काफ मसल का ही कंसिडर किया जाता है उसके। और गैस्ट्रोनीमियस मसल जो है ये आपकी काफ मसल के पास पाया जाता है, और ये बेसिकली लोअर पार्ट ऑफ योर लेग है वहां पर पाया जाता है। और ये मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है, और इसके जो दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है गैस्ट्रोनीमियस मसल के, एक तो वॉकिंग, और दूसरा जो आपका पोस्चर है, बॉडी का जो पोस्चर है उसको मेंटेन करता है। यानी कि अगर आप सीधे खड़े हैं तो डेफिनेटली उसमें पोस्चर आपका सीधा है, और अगर आप टेढ़े मेढ़े इस तरह खड़े हैं तो उसमें इस मसल में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, जिसकी वजह से आपकी जो बेसिकली पोस्चर प्रॉब्लम है वो इस वजह से आता है, गैस्ट्रोनीमियस मसल की वजह से आता है। फिर अगर फ्रंट पार्ट ऑफ थाई को अगर हम देखें, यानी कि ये तो हमने बैक पार्ट ऑफ द थाई डिस्कस कर लिया, और अगर इसको हम फ्रंट साइड पे डिस्कस करें तो फ्रंट पे हमारे पास सबसे पहले जो मसल आता है, ये वाला जो आप डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला मसल फ्रंट साइड पे, इसको हम क्वाड्रिसेप मसल कहते हैं। और क्वाड्रिसेप मसल बेसिकली रनिंग में हेल्प आउट करेगा, वॉकिंग में, जंपिंग में, किकिंग में, इसमें हेल्प आउट करेगा। अब जो क्वाड्रिसेप मसल हमारे पास आता है, क्वाड्रिसेप मसल के बाद फिर निचला जो मसल हमारे पास आता है, सर्टोरियस मसल आता है इसके नीचे। और सर्टोरियस मसल आपके एब्डोमिनल एरिया से स्टार्ट होकर आपकी नी तक जाएगा। और इसके जो बेसिक दो फंक्शन है सर्टोरियस मसल के, कि ये जो लॉन्ग मसल इन फ्रंट ऑफ योर थाई फ्लेक्स एंड रोटेट योर हिप, बेसिकली जो हिप एरिया का फ्लेक्शन है और रोटेशन है उसमें हेल्प आउट करेगा। और सेकेंडली जो नी बेंडिंग है वो भी इसके सार्टोरियस मसल की वजह से नी बेंडिंग आएगी। फिर उसके बाद अगला जो मसल हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस मसल को हम पिरोनियल मसल बोलते हैं। और पिरोनियल मसल बेसिकली आपकी जो लेटरल साइड ऑफ लेग है, यानी कि अगर आप देखें तो ये टिबिया की साइड पे, लेटरल साइड पे पाया जाएगा। और बेसिकली ये किसके साथ अटैच होता है? फुट के साथ अटैच है यहाँ पे। और इसका जो बेसिक फंक्शन क्या है, ये जो एंकल ज्वाइंट है, जो टखने का ज्वाइंट है, उसको बेसिकली स्टेबलाइज करता है। और उसको स्टेबलाइज करने के बाद क्या है, फुट के अंदर जो मूवमेंट होती है सारी, वो बेसिकली कंट्रोल करता है पिरोनियल मसल। अब पिरोनियल मसल को भी हमने डिस्कस कर लिया। पिरोनियल मसल को डिस्कस करने के बाद हम बेसिकली जो दोनों लेग्स के जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट हैं उनकी तरफ आ जाते हैं। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में अगर देखें जो मसल है दोनों तरफ, यहाँ पे
ये जो लोकेशन मसल की है यहाँ पे, और ये लोकेशन मसल है, इसको हम कहेंगे बाइसेप फेमोरस मसल कहेंगे बेसिकली। और बाइसेप फेमोरस बेसिकली पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग का मसल है। और बाइसेप फेमोरस का जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है जी, हेल्प इन हिप एंड नी जॉइंट मूवमेंट। यानी कि जो हिप मूवमेंट है और जो नी जॉइंट के मूवमेंट है उसमें बेसिकली बाइसेप फेमोरस हेल्प आउट करते हैं। बाइसेप फेमोरस के बाद हमारे पास आ जाता है सेमी टेंडेनियस मसल आ जाता है। सेमी टेंडेनियस मसल को भी लेग का जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है उसका मसल कंसिडर किया जाता है, यहाँ पर बिल्कुल वाक़ है। और जो सेमी टेंडेनियस मसल है ये बेसिकली क्या करता है, लेग को इंटरनली रोटेट करने में हेल्प आउट करता है। यानी कि लेग को जब इनर साइड पे आप रोटेट करेंगे तो वो किसकी वजह से होगा, वो सेमी टेंडेनियस मसल की वजह से होगा। और सेमी टेंडेनियस मसल जो है इसका अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये बेसिकली पॉप्लिटियल मसल को असिस्ट करता है नी की मूवमेंट के लिए। अब जो पॉप्लिटियल है उसको भी आगे डिस्कस करेंगे इसमें। सेमी टेंडेनियस टेंडेनियस के बाद हमारे पास आ जाता है सेमी मेम्ब्रेनियस मसल। सेमी मेम्ब्रेनियस मसल जो है ये बेसिकली फ्लैट टेंडन लाइक मसल है। और इसकी भी दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक तो ये फ्लेक्स करता है और दूसरा जो है ये इंटरनल रोटेशन ऑफ नी। यानी घुटने को आप अंदर की तरफ रोटेट करेंगे तो वो मूवमेंट जो है ये बेसिकली सेमी इसकी वजह से आएगी, मेम्ब्रेनियस की वजह से आएगी। सेमी मेम्ब्रेनियस के बाद हम आते हैं पॉप्लिटियल मसल के ऊपर। एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि जो पॉप्लिटियल मसल है ये बेसिकली घुटने के बिल्कुल बैक साइड पे पाया जाता है। यानी कि ये जो घुटने की बैक साइड है बिल्कुल यहाँ पे आपको, ये जो बड़ा सा मैं बना रहा हूँ ये जो एरिया है ये क्या है, बेसिकली पॉप्लिटियल मसल है जो बिल्कुल स्मूथ और छोटा सा मसल है घुटने की बैक साइड पे। और ये जो पॉप्लिटियल मसल है इसका जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है, पॉप्लिटियल मसल का जो बेसिक फंक्शन है कि ये नी को स्टेबलाइज करता है, हेल्प करता है मूवमेंट में और स्टेबलाइजेशन में। अगर ये प्रॉब्लम इस मसल में अगर वीकनेस आ जाएगी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाएगी या कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, अगर पॉप्लिटियल नर्व इसके नीचे जा रही है वो डैमेज हो जाती है तो उसकी वजह से भी नी जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा, उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहेगी और जिसकी वजह से उसमें उसके ऊपर वजन नहीं बढ़ेगा आपका। फिर जो लास्ट में हमारे पास मसल आता है सोलियस मसल आता है। सोलियस मसल जो है ना बिल्कुल आपका जो सोल है, जो बेसिकली तलवा है फुट का उसके थोड़ा सा ऊपर करके पाया जाता है और फिर नीचे तक आता है फुट तक ये मसल। और सोलियस जो मसल है ये बेसिकली जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग इसको कह सकते हैं, बिल्कुल बैक साइड पे होता है। और सुपरफिशियल मसल होता है जो सरफेस पे वाक़या होता है। और इस मसल का जो बेसिक इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है जी, हेल्प इन स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। यानी कि आप जो हम वॉक कर रहे हैं, जो हम स्टैंड कर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, तो वो बेसिकली सोलियस मसल की वजह से हो रहा है। इन अ शॉर्ट व्यू एक दफा फिर इसको रिपीट कर देते हैं, सिंगल लाइन में रिपीट करते हैं। सबसे पहले तो अगर देखा जाए कि हमने आज जो पढ़ा है ये बेसिकली जो है लेग मसल्स हमने पढ़े हैं। लेग मसल्स में फ्रंट पार्ट के मसल्स और बैक पार्ट के मसल्स, यानी कि आपकी एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग के हमने मसल्स पढ़े हैं। और बोथ ये मसल जो हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि पहले मैंने बताया है कि डेली रूटीन की जो लाइफ है उसमें रनिंग है, वॉकिंग है, जंपिंग है, रोटेशन है, स्क्वेटिंग है, एबडक्शन है, एडक्शन है, ऑल काइंड ऑफ मूवमेंट्स जो है ना इसमें ये लेग मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। और उसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया बेसिकली ग्लूटल मसल को। ग्लूटल मसल कहाँ पे, हिप के पास पाया जाता है और इसका बेसिक फंक्शन जो है एबडक्शन है, एडक्शन है। इसके अलावा लेग की इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन जो है वो बेसिकली ग्लूटल मसल की वजह से होती है। फिर उसके बाद सेकंड मसल जो हमने पढ़ा वो बेसिकली हैमस्ट्रिंग हमने मसल पढ़ा। हैमस्ट्रिंग मसल्स थाई की बैक साइड पे पाए जाते हैं, यानी कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग जो है वहां पर पाए जाते हैं। और जो हैमस्ट्रिंग मसल है, हैमस्ट्रिंग मसल का बेसिकली जो एक्शन है वॉकिंग में है, क्लाइंबिंग स्टेयर्स में है जब सीढ़ियां चढ़ते हैं, और स्क्वेटिंग करते हैं, और जितनी अदर मूवमेंट्स हैं लेग की वो हैमस्ट्रिंग मसल की वजह से होती है। हैमस्ट्रिंग मसल के बाद फिर हमारे पास गैस्ट्रोनीमियस मसल आ जाता है। गैस्ट्रोनीमियस मसल जो है आपकी लेग का जो लोअर पार्ट है जिसको आप पिन्नी बोलते हैं वहां पर पाया जाता है साइड पे। और बेसिकली इसको काफ मसल ही कंसिडर किया जाता है, ग्रुप ऑफ काफ मसल कंसिडर किया जाता है।
और जो गैस्ट्रोनीमियस मसल है, इसके बेसिकली दो इम्पोर्टेंट, ये इसको मोस्ट पावरफुल मसल समझा जाता है, यानी कि बेसिकली पावरफुल मसल इसलिए इसको कहते हैं कि ये जो है ना बेसिकली आपकी वॉकिंग में हेल्प आउट करता है। और वॉकिंग के साथ साथ जो पोस्चर मेंटेनेंस है, यानी कि आपके जो पोस्चर को मेंटेन करना जो है, वो भी गैस्ट्रोनीमियस मसल का काम है। गैस्ट्रोनीमियस मसल के बाद फिर हम आ जाएं तो क्वाड्रिसेप मसल्स के ऊपर हम आ जाते हैं। क्वाड्रिसेप मसल्स कौन से होते हैं? आपकी जो थाई का फ्रंट पार्ट है यहाँ पर लोकेट होते हैं। और ये जो क्वाड्रिसेप मसल्स हैं ये भी बेसिकली रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग, किकिंग इसमें हेल्प आउट करते हैं। फिर उसके बाद सार्टेरियस मसल हमारे पास आ जाता है। सार्टेरियस मसल जो है बेसिकली आपकी एब्डोमिनल एरिया से थोड़ा सा नीचे करके स्टार्ट होते हैं और नी तक जाते हैं। और जो सर्टेरियस मसल है इसके भी बेसिकली देखा जाए तो हिप और नी जॉइंट की जो मूवमेंट्स हैं उसमें ये हेल्प आउट करता है। तो सार्टेरियस मसल के बाद फिर हम पेरोनियल मसल की तरफ आ जाएंगे। पेरोनियल मसल जो है हमारी जो लेग का लेटरल पार्ट है, निचला जो एंकल जॉइंट के पास वहां पर वाक़या होता है। और जो पेरोनियल मसल है ये बेसिकली क्या करता है, जो एंकल जॉइंट है उसको स्टेबलाइज करता है और जो फुट है उसकी मूवमेंट में हेल्प आउट करता है। अब इन मसल्स के बाद फिर हम पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में अगर आ जाए तो हमने बाइसेप फेमोरस पढ़ा। तो बाइसेप फेमोरस जो है बेसिकली लेग के बिल्कुल बैक साइड पे दोनों मसल पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, हिप और नी जॉइंट की बेसिकली जो मूवमेंट है उसमें हेल्प आउट करते हैं। फिर उसके बाद हम आ गए सेमी टेंडेनियस पे। सेमी टेंडेनियस बेसिकली क्या करता है, ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का मसल है। और सेमी टेंडेनियस जो है बेसिकली लेग को इंटरनली रोटेट करता है और ये बेसिकली असिस्ट करता है किसको, पॉप्लिटियल मसल को असिस्ट भी करता है, उसकी हेल्प भी करता है नी को मूव करने में। फिर उसके बाद हमारे पास सेमी मेम्ब्रेनियस आ जाता है। सेमी मेम्ब्रेनियस जो है बेसिकली फ्लैट टेंडन लाइक मसल है और ये बेसिकली फ्लेक्शन में हेल्प आउट करता है और नी की रोटेशन में हेल्प आउट करता है। अब इसके बाद जो मसल आता है वो पॉप्लिटियल मसल आ जाता है। पॉप्लिटियल मसल जो है वो बेसिकली नी की बिल्कुल बैक साइड पे पाया जाता है, नर्म सा और छोटा सा मसल होता है। और जो पॉप्लिटियल मसल है ये क्या करता है, स्टेबलाइजेस द नी, ये बेसिकली नी को स्टेबलाइज करता है, घुटने को स्टेबलाइज करता है। और जब ये नी को स्टेबलाइज करे तो डेफिनेटली उसमें स्ट्रेंथ आएगी। और फिर लास्ट में हमने जो मसल पढ़ा वो सोलियस मसल है। सोलियस मसल बिल्कुल आपका जो सोल है इसके थोड़ा सा ऊपर करके पाया जाता है। और सोलियस मसल जो है ये सुपरफिशियल मसल है जो सरफेस पे पाया जा रहा है। और जो सोलियस मसल है इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, यानी कि आपकी जो स्टैंडिंग पोजीशन है, जो आप खड़े होते हैं बेसिकली, वो इस मसल्स की वजह से होते हैं। और इसके अलावा वॉकिंग में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर था यहाँ तक था, जिसमें हमने एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग के जो मसल्स हैं उनकी लोकेशन और उसके फंक्शंस को पढ़ा। नेक्स्ट इंशाल्लाह इन वीडियो में नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए डॉक्टर इमरान को इजाज़त दीजिएगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।